economics, we studied one concept called as taxation structure. That means we study types of tax structure. Taxation systems हमने study किए थे, where I said the first was proportionate taxation, where I said whatever may be your income, the rate of tax will remain the same. And thereafter, we studied progressive system, जहाँ पे मैंने बताया था that higher the level of income, higher will be the tax. And after that, we studied regressive taxation system. और regressive system में मैंने आपको बताया था that higher income, lower tax. Higher income, lower tax, what we studied in our regressive system. Now today I'm going to discuss types of taxes. Types of taxes. ये दो पार्ट मतलब आज हम ये डिस्क्राइब करने वाले हैं what do we mean by tax. We have already studied there are two types of tax. What we will study today. There are two types of tax. One is direct taxes and other one we have is indirect taxes. डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दो टाइप के टैक्स हम आज डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट अपना रहेगा आज ए. डायरेक्ट टैक्सेस. ए डायरेक्ट टैक्सेस. अभी डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है? Let us describe them in terms of some points. I will discuss it. It refers to the tax in which burden of taxes cannot be shifted to other person. मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जिसके अंदर हम टैक्स का बर्डन जो है, टैक्स का लायबिलिटी जो है, वो किसी दूसरे पर्सन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट शिफ्ट इट टू सम अदर पर्सन.
मतलब ये अगर मेरा लायबिलिटी है, बर्डन बोल दिया मतलब लायबिलिटी, तो अगर टैक्स पे करने का अगर लायबिलिटी मेरा है तो मैं ही उसको पे करूंगा. आई कैन नॉट शिफ्ट इट टू सम अदर पर्सन. अभी जैसे आई टेक अप वन एग्जांपल. सपोज फॉर एग्जांपल this financial year closed on 31st of March 2020. 31st March 2020 को ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ. अभी उस ईयर के इनकम के ऊपर मुझको जितना भी टैक्स पे करना था, से फॉर एग्जांपल आई वाज सपोज टू पे टैक्स ऑफ ₹50,000 फॉर एग्जांपल. अभी मगर क्या हो गया, जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, देयर केम अप लॉकडाउन. लॉकडाउन हो गया और मैं अपने गांव चला गया. अभी गांव जाते जाते क्या हो गया, मैंने आपका एक जो फ्रेंड है से रिजॉय, आपका फ्रेंड जो रिजॉय है, मैंने उसको बोला कि एक काम करना, मेरा जो भी टैक्स है ना तुम भर देना, मैं अभी गांव में हूं, मैं आऊंगा तब अपने हिसाब समझ लेंगे हम लोग. रिजॉय सर ओके जाओ जाओ सर आराम से, डोंट वरी, मैं पे कर देगा आपका टैक्स. ये बोलने पे मैं रिलैक्स होके गया. अभी वहां पे से मैं आया तो मैं आके घर देखता हूं तो मेरे घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है, तुमने टैक्स पे नहीं किया, पे करो. और ऑफिसर्स आ गए मेरे पास टैक्स रिकवरी के लिए. मैं बोलता हूँ देखो मैंने तो है ना रिजॉय को बोल दिया था, आप उसको पूछो उसने क्यों नहीं भरा. तो आई कैन नॉट से दिस बिकॉज इट इज डायरेक्ट टैक्स. वो मेरा टैक्स था और वो मुझको ही पे करना था. वो मेरा टैक्स था तो वो मुझको ही पे करना था. तो डेफिनेटली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो टैक्स है, ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, वेयर द पर्सन हु पेज द टैक्स विल बेयर द टैक्स. मतलब मैं मेरा बर्डन, मैं मेरा लायबिलिटी किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता. मैं ये लायबिलिटी और किसी के पास शिफ्ट नहीं कर सकता. ओके इसके अंदर दूसरा पार्ट, a person who pays the tax has to bear the tax. मतलब जो भी ये टैक्स पे करेगा वो ही उसको बेयर भी करेगा. He has to pay the tax and he has to bear the tax. He cannot pass it on to some other person. The person who will pay the tax will bear the tax. दूसरे किसी पर्सन के ऊपर ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये दूसरे किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा. ओके एंड इसके अंदर तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट such taxes are applicable on persons. Such taxes are applicable on persons. मतलब ये जो टैक्स है that will be applicable on persons. It will be applicable on persons. What does that imply? There are two types of persons. Do you know?
Which are those two types of persons? There are two types of persons. Can you tell me? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Rational and irrational. No, wrong. Wrong. Rational, irrational नहीं. Very good. Dhwani, very good. Natural persons and artificial persons. Very good. Okay. So, natural persons, that means the individuals like you and me. Rational persons means the individuals like you and me. And artificial persons बोल दिया मतलब body corporates, companies, firms, etc. are artificial persons. तो इन लोगों के ऊपर ये टैक्सेस अप्लाइड रहेंगे. Remember that this tax shall be applicable on natural persons and artificial persons. Okay. Now, ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस. इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स, corporate tax, etc. are the best example for your indirect taxes. Sorry, direct taxes. Now, in our lecture today, we would describe the other type of tax. The second type of tax what we have is indirect tax. Second type of tax what we have is indirect tax. इसके भी 3 पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके. पहला पॉइंट, the tax in which burden of tax is shifted from one person to another. Burden of tax is shifted from one person to another is called इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब यहाँ पे अब अपना जो टैक्स लायबिलिटी है वो हम एक पर्सन के पर्सन पे शिफ्ट होगा. अभी जैसे बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक अप इज सेल्स टैक्स. मैंने गुड सेल किया,
टैक्स मुझको पे करना है, मैं पे करूंगा, मगर मैं आपके पास से रिकवर करूंगा। आई विल रिकवर इट फ्रॉम यू, आई विल रिकवर इट फ्रॉम यू। मैंने बर्डन शिफ्ट कर दिया, पे भले मैं कर दूंगा मगर रिकवर करूंगा आपके पास से। देन सच टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे पर्सन पेइंग and person bearing tax are different. Person who will pay the tax and person who will bear the tax are different in this type of taxes. मतलब पे करने वाला अलग, पे मैं करूंगा। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ ये जो है आपका जीएसटी, फीस पे आपने जीएसटी पे किया, ओके, आपने पे किया, पे आपने किया और मैंने गवर्नमेंट के पास पे किया और बाद में आपके पास से रिकवर किया। तो पे करने वाले आप, मैं हूं, पे करने वाला मैं हूं और बेयर करने वाले लोग आप हो। Person paying and person bearing the tax are different. Then such type of taxes are indirect tax. और इसका तीसरा रूल, such tax is applicable on goods and services. Such tax are applicable on goods and services. ये जो टैक्स है, हमने डायरेक्ट टैक्स बताया था कि इट इज एप्लीकेबल ऑन होम, इट इज एप्लीकेबल ऑन persons, natural and artificial persons. But this tax is applicable on, it is applicable on goods as well as services. Okay, तो ये हो गए टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टैक्सेशन के रेवेन्यू हो गए। नाउ वी विल डिस्कस non-tax revenue of the government. Non-tax revenue of the government. Abhi, these are some income. Now, what do we mean by non-tax revenue? I would say non-tax revenue of the government are some incomes. Non-tax revenue of government are some incomes of the government generated from the sources other than taxation. टैक्स को छोड़ के और दूसरे कोई सोर्स से जो जनरेट होते हैं, those revenues are called non-tax revenues. Those revenues are called non-tax revenues. ओके, तो गवर्नमेंट को दूसरे जो कोई सोर्स से रेवेन्यू जनरेट होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। कोई दूसरे सोर्स से रेवेन्यू जनरेट होंगे, ओके, दे आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अभी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है, लेट अस डिस्क्राइब देम वन बाय वन। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को और कौन कौन से सोर्स से पैसा मिलता है, लेट अस डिस्क्राइब देम वन बाय वन। वन, it is generated from fees. देखो, गवर्नमेंट
provides us some services. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस सम सर्विसेज, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अपने पास से कुछ फीस लेती है. अभी जैसे when we go to government to obtain license,